Hello to all of you. Today I will discuss about DOH, Department of Health, that is regulatory body of Abu Dhabi. Before starting, I want all of you to subscribe my channel. You may see this on your screen. So यहाँ पे 54.6% लोग वो हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने नहीं किया हुआ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, तो यानी कि अभी तक मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कम किया हुआ है। तो अभी भी जो मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। So it's a request to all of you to subscribe my channel. Secondly, now you can see a country list here on screen. तो ये वो countries हैं जहाँ से मेरी videos को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो firstly, I will thanks to Pakistan, thank you to India, thank you to Saudi Arabia. तो ये countries तीन वो countries हैं जहाँ से मेरी video ज़्यादा देखी जा रही है। So every one of you, listen carefully. Please do a favor to me today. Comment your name and country below in comment section so we could know from where you are watching. Plus I will arrange a giveaway soon, or a type, you may say, a lucky draw soon. So I will reveal about this giveaway sooner. So for that, keep in touch and press the bell icon and comment below to have a chance to win. So now let's move towards the topic. What are the requirements and considerations for DOH, Department of Health, are practicing as a physiotherapist in Abu Dhabi? Any one of you applying for a license must fulfill the following requirements. Okay, you may see on your screen, must be graduated from national or international recognized college or university. This is the first requirement. Let's move towards the second requirement. For graduates from UAE universities, the program and university must be accredited by MOE, that is Ministry of Education. Let's move towards the third point. Higher diploma certificates from the Higher College of Technologies in UAE will be equivalent to a bachelor's degree as per MOE, Ministry of Education standard. Okay, let's move towards the fourth one. Required master degree must be minimum of 2 years. And then anyone of you who is listening or watching out of UAE and is applying from other country, then you must have 6-month internship, that is post graduation. यानी कि ग्रेजुएशन के दरमियान में आपकी कोई भी इंटर्नशिप हुई हो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आपने इंटर्नशिप की है वो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आपको वैलिड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये आपके अपने कंट्री से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पेप्टा की रजिस्ट्रेशन होती है वो आपको चाहिए होती है, या तो उस कंट्री की आपको चाहिए होगी जहाँ पे आपने लास्ट एम्प्लॉयमेंट की है। उसके बाद जो असिस्टेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट्स, वो इंडिपेंडेंटली अबू धाबी में वर्क नहीं कर सकते एंड उनको वर्क किया जाता है, वो वर्क करते हैं अंडर अ लाइसेंस एंड अंडर अ सुपरविजन ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट. Okay, let's move towards the last point. Academic transcripts must be submitted for credentialing purpose. जैसे UK USA में क्रेडिट आवर्स मैच किए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ली जाती है और उससे आपके क्रेडिट आवर्स को मैच किया जाता है। लास्ट में मैं ये बताऊँगी कि आपकी एजुकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो BSPT या DPT आपको चाहिए होते हैं मिनिमम आपको, यानी आपका जो कोर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो 3 इयर्स होना चाहिए, और जैसे कि BS का 4 इयर्स होता है और DPT का 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होती है, और उसके बाद आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट चाहिए होता है। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग मास्टर्स की तरफ। तो मास्टर्स में भी ऐसे ही है,
कि आपको जो आपका मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो 2 इयर्स तक होनी चाहिए, यानी कि 2 इयर्स होने चाहिए आपके एजुकेशन की मास्टर्स डिग्री को। और उसमें भी सेम इसी तरह 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ तक आज की वीडियो में था। तो नेक्स्ट वीडियो आप फॉलो करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूँगी सब कुछ कि अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन एंड दिस एंड दैट, ऑल डिटेल में उसमें आपको बता दूँगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी जो आप जब तक पूरी कर लें अपनी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल आ जाएगी। और अगेन मैं बताऊँगी कि एक मैं गिव अवे अरेंज करूँगी या यूँ मैं से लकी ड्रॉ अरेंज करूँगी, और वो लकी ड्रॉ किस किस बेस पे होगा तो ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन इसके लिए यही है कि कमेंट्स लाजमी किया करें वीडियो के नीचे, तो फिर आगे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो लकी ड्रॉ वगैरह की तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें।